Yeah, so that is like the mantra for like not to putting too much pressure on ourselves कि हमें सब कुछ perfect like a superwoman सब कुछ करना है. Right, right. What happens what happens when you try to do things in a perfect way, ultimately you're going to hurt yourself. वैसा होता है कि नहीं हो पाता तो आप अपने को ही परेशान होते हो. वैसा if you are getting stressed of some kind of work, ask for help. बात करना जरूरी है किसी के साथ. If you're not asking for the help, then you're going to end up yourself in trouble. आपको नहीं आता है तो या तो आप सीखो या किसी से मदद लो. दैट विल बी द बेस्ट पार्ट. एंड डोंट ट्राई टू प्रूव योरसेल्फ कि हाँ मैं घर भी संभाल सकती हूँ, मैं बाहर भी सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे ये भी आता है. ठीक है, कोई बात नहीं. यू आर नॉट द परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. नहीं आता कोई चीज, सीख लेंगे जब टाइम होगा. यू शुड टॉच योर चाइल्ड टू एक्सेप्ट योर फेलियर्स फर्स्ट. सक्सेस तो इजीली हैंडल कर ही लेगी वो. ऐसा है. तो मैं उनको समझाती हूँ. अभी पता नहीं बड़े होंगे तो कितना सीखते हैं. बट एज अ मदर, वॉट एवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर, दैट आई ट्राई टू मेक देम डील विद. इट इज गुड मेमोरी ना. अपने पास अच्छी नहीं तो उसको याद रहेगा कि किसी के साथ मैंने उसको छुड़वा दी. नो. जब हम अपने पेरेंट्स की बात करते तो कैसे हम बात करते कि जब मैं छोटी थी तो मम्मी या डैडी मुझे स्कूल लेके जाते थे, वो मुझे लेके आते थे. नॉट अबाउट कि जो लोग नहीं कर पाते वो अच्छा नहीं है, बट अगर आप कर सकते हो तो व्हाई नॉट. वैसा है. Yeah, these are the small things now. I think kids remember. Being a kid, we also had so many of such small sentences that we follow now in our daily life. During pandemic also, like it was made compulsory for doctors, right? At that time, how did you manage? It was the toughest time. It was the toughest time because you can't call anyone. सब किया है फिर तो. whatever things you haven't done, वो भी उस टाइम पे करना पड़ा. because you know we were working with very limited staff also. So afternoon slot में we used to cover. So at that time we tried. Or otherwise I generally prefer to go on Saturday or Sunday where the kids are not going to school, and then that time it is easily you can manage. If you want to manage, the things are going to manage. It is like that. Proper brushing technique एक होता है. If you go through the videos and all that, you will find how is the proper technique. I think 50 to 60% people are doing in a wrong way. Hey guys, welcome back to my channel. Today we have another fabulous guest, Dr. Deepkriti Gupta. She is a dentist as well as mom of 3 awesome daughters. So let's welcome Dr. Deepkriti Gupta. Dr. Deepkriti, glad to see you on my channel, and I can see you that you are multitasking from your clinic. So I'm glad that you accepted my request and took out time from your busy schedule. Thank you, Anita, for calling me and taking my interview today on your YouTube channel. And it is a very privilege to talk you to. So thank you so much for inviting me today. Thank you, thank you. So would you like to share us, give us a brief about your journey, how it has been? My name is Dr. Deepkriti Gupta. I'm working as a dentist in my clinic at 3GI Clinic and Dental Care Center. I belong to a very, small family and I was living in a very small town also. It is somewhere you might have listened, it is in Satna, Madhya Pradesh. And from there, I have completed my education. Then I got my seat for medical in Nagpur. And again, I have studied in Delhi and then returned back to Mumbai and started practicing over Mira Road. So it is almost, you can say, 12 years of journey for my clinical practice till now. Awesome, awesome. So almost a decade you have spent. Yeah. तो अब तो आपको दांतों की सारी टेक्निकलिटीज पता चल गई होगी. दांत देख के बता देते होगे क्या प्रॉब्लम है. Sometimes we need some investigations and then we decide what are the things we can do. But mostly पता चलता है, कभी नहीं भी पता चलता है. Then there are so many tricks and trips which we follow to decide any kind of treatment. For that we have studied some around 5.5 years. Still I'm learning so many things in colleges and conference so that I can update and upgrade myself in day-to-day life. Yes. How do you
see to it that you can balance your cleaning along with the kids, because I know that you have three cute little daughters. So don't you find it little bit difficult with three kids, and with the clinic thing? And I have seen you, I have visited your clinic, I've seen the queue in your clinic. So it is jam packed at the clinic, it is jam packed at home. So how do you manage? Actually, if you see, one thing I will tell you. Recently मैंने ना एक शो देखा था, आपने भी देखा होगा, केबीसी. इन देयर अमिताभ बच्चन टोल्ड कि उन लोग कोई शूट कर रहे थे कहीं पे, आई थिंक फॉर ऊंचाई. एंड इन some of the parts were shooted in hill station. I don't remember which hill station. And some of the part were shooted in Delhi. There, in the hot season, they were wearing all sweaters and jackets. If you watch that episode, you might think. And what he told कि उन्होंने बोला कि किसी ने पूछा कि आपको गर्मी नहीं लग रहा है, आपने इतना पहना हुआ, हम तो सब शूट के बाद उतार देते हैं, निकाल देते हैं. तो वो बोलते थे ये मेरे दिमाग में है, अगर मुझे लग रहा है कि मुझे गर्मी है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, देन आई विल थिंक कि ये प्रॉब्लम है. बट अगर वो आपका एक लाइफस्टाइल ही है, देन यू विल नेवर कंसिडर एज अ प्रॉब्लम. तो मेरे लिए कैसा है कि इट इज लाइक कि आई लाइक टू डू माई वर्क. Then again, at home also I like to be a mom and a very cool mom. Sometimes I'm strict also, but it is not like कि यही करना है वो करना है. In clinic also, but I am very kind of कि ऐसा messy नहीं चलता मुझे कि चलेगा, अंडर वर्क या ऐसा नहीं. सो दैट सेम थिंग. सो व्हेन यू रियलाइज कि आपको आपका एक्सपेक्टेशन कैसे, देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि ये मैनेज कैसे होगा. एंड एट दैट टाइम ओनली, I have that privilege that it is my own clinic, so I can appoint or schedule according to my time. अगर मैं यही शायद कहीं काम करती होती थी तो ये पॉसिबल नहीं होता. So it is. And for dental I will tell you कि most of the patients are not in emergency that you need to go and rush and check them. It is like कि आपको जब टाइम है then you can call them so that they उनका भी टाइम नहीं वेस्ट हो, हमारा भी काम हो जाए. So it is like things are going balanced in that way. And I know कि मुझे इतना टाइम, मतलब it is limited working hours कि इतना ही देना है, इससे ज्यादा है तो शायद. I am working with my 5 consultants also, so few doctors are also coming and working with me. तो अगर मुझसे जितना हुआ तो ठीक, नहीं तो I will call them, they will also come and work with me. So like that the things are going on. And at home also I am very lucky that I am having good house health. वो सब बोलते हैं ना कि सब चले जाए लेकिन काम वाली बाई नहीं जानी चाहिए, वैसा है. तो आई हैव दैट हाउस हेल्प, दे वर्क विथ मी एंड दे आल्सो अंडरस्टैंड मी कि हाँ आज ये काम है तो हेल्प कर देंगे. इट इज नॉट लाइक कि अकेले मैं कर रही हूँ, फॉर एनीथिंग यू नीड अ गुड टीम ऑल्सो, तो हो जा रहा है. Great, great, great. So basically, it's a teamwork at home as well as in clinic. During pandemic also, like it was made compulsory for doctors, right? At that time, how did you manage? It was the toughest time. It was the toughest time because you can't call anyone. सब किया है फिर तो, वॉट एवर थिंग्स यू हैवंट डन वो भी उस टाइम पे करना पड़ा. बिकॉज वी वर वर्किंग विद वेरी लिमिटेड स्टाफ ऑल्सो. एंड जितना बाहर के लोग डरे हुए थे उतना हम भी डरे हुए थे. एंड यू जस्ट इमेजिन वी आर द डेंटिस्ट, हमको तो काम ही वहीं पे करना है. What else? Without mask only you have to talk. And that time was all wearing pp kids and doing the patient then discarding. Then घर जाके अलग ही चल रहा था कि क्या पता उसको नहीं. But still things going on. Managing. फिर हो गया. जब शुरू शुरू में आया था ना, then at that time we were knowing nothing about how we are going to deal with pandemic. But later on everyone was getting educated and we were attending conferences, so many talks where we were getting updates how to deal with the things. And it became very calm and आराम से हो गया वैसा है. So it was good. But वो घर जाके तो वापस सब करना पड़ता था. We again so many things were there. A clinic में भी also the staff were very less. We were very limited people working. We don't have called anyone who were not staying in Meena Road. बाहर से बुलाते हैं because traveling was another issue. तो हो गया but निकल गया वो टाइम भी.
Right. Because it But is like, without house help, it is very difficult to stay on, at least for me. not only for you, I think for everyone who was like working, and you have such challenging job कि यहाँ पे you have to be present. ऐसा नहीं कि यहाँ पे Right. लैपटॉप खोला और आपने घर से भी काम कर लिया हाँ, for वही वही। like हाँ कि हमारा काम लैपटॉप से भी चल जाता है, तो हम लाइक घर में यहाँ पे सब्जी हिला रहे होंगे एंड यहाँ पे हम कुछ कर रहे होंगे, दैट वे आल्सो वी कैन मैनेज। हाँ, मटर छील रहे होंगे यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, बट फॉर योर प्रोफेशन यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। आप ऐसे मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। उसके बाद है ना घर पे भी जाके वी वर लाइक कि ये अभी क्लीन करना है, अभी हम वहां से आए हैं तो ये भी क्लीन करना चाहिए, सो नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि अब मैं सोचती हूँ कि हमने कितना सारा फालतू काम भी उस टाइम पे किया है। इट वाज लाइक जो जैसा बोल दे बस वी वर फॉलोइंग वॉट एवर द थिंग्स वर गोइंग ऑन, क्योंकि जब पता ही नहीं था आप फॉलो कैसे करें, बट धीरे धीरे जब पता चला तो द थिंग्स वर गेटिंग रिलैक्स एंड रिलैक्स एट होम। फिर धीरे धीरे हो गया, निकल गया वो टाइम, आप बोल सकते हैं। इट मस्ट हैव बीन रियली टफ। मतलब डॉक्टर्स के लिए एक तो दैट कोविड थिंग इटसेल्फ वाज सो मच, वर्ड ही इतना खतरनाक था कि उसको सुन के ही ऐसा लगता था। एंड यू हैड स्मॉल डॉटर्स, तो आपको और भी डर लगता होगा कि अगर मुझे हुआ तो उनको भी हो जाएगा। एंड यू आर That वर्किंग was the डायरेक्टली विद द टीथ, मतलब वो माउथ से तो स्प्रेड हाँ, हो ही रहा था, तो वो और ज्यादा टेंशन वाली बात। राइट। कितना भी आप चेकअप करो बट सी यू नेवर नो हु हैज कम टू यू, वैसा होता है। या मैंने उस टाइम पे तो आई वाज लाइक कि मैंने कितने लोगों से ऐसे इंटरेक्ट भी किया था जिनको था भी, बाद में पता चला हमको, देन अगेन दैट सैनिटाइजिंग प्रोसेस गोइंग ऑन, सो मेनी थिंग्स, इट वाज लाइक ह्यूज हेडेक उसको। इवन मतलब फिर मुझे तो रात भर नींद नहीं आती थी कि हाँ अच्छा उसको हो गया, अभी चेक कराना जाना पड़ेगा, देन वी हैड गो फॉर द अवर टेस्टिंग आल्सो अगेन एंड अगेन, कि अगर किसी के भी कॉन्टेक्ट में गए तो हमें पता कैसे चलेगा, तो दैट वाज द ओनली थिंग। सो अगर पता चला तो देन अगेन वी गो फॉर टेस्टिंग, देन रिपोर्ट्स आती थी, जब तक रिपोर्ट्स नहीं आती थी तो तब तक रहता था कि नहीं क्या आएगा मालूम नहीं, बट थिंग्स वेंट ऑन, मतलब मुझे तो नहीं हुआ तभी, तो अच्छा था। एंड हाउ अबाउट डॉटर्स एंड हस्बैंड? माय हस्बैंड वाज हैविंग दैट टाइम, बाकी बच्चों को तो नहीं, टच वंस वुड। वंस हुआ। हाँ, दैट इज गुड। मतलब वो एक बहुत बड़ा टेंशन रहता है, बच्चों को नहीं होना चाहिए। इट विल बी लाइक, मतलब इमीडिएटली ही गॉट टू अंडरस्टैंड एंड इमीडिएटली मतलब आपको पता भी चलने लगता है, ऐसा वो मुझे बोल रहे थे। आई वाज आस्किंग हिम, बट ठीक था, मतलब ही वाज एट होम फॉर, इट वाज वेरी लेट ओनली होम फॉर, एंड वन पेशेंट इंटरेक्टेड विद मी हिम एंड लाइक दैट इज फाइन, बट ठीक था। इट वाज नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा, बट वी वर वैक्सीनेटेड एट दैट टाइम की बात बता रहे okay. हैं। And I have seen you like educating people on this, जहाँ पे आप दोनों like okay, for your information guys, her husband is also an eye surgeon, eye specialist. So both of them like go and do this on live events जहाँ पे वो लोगों को aware कराते। So at that time how do you manage? तभी you keep some staff at home और कि वो सी किड्स we का रूटीन अलग रहता है, हमारा रूटीन एकदम से बाहर जाना है, कुछ करना है, तो दैट टाइम यू मस्ट हैव टू मैनेज, राइट? हाँ, इनिशियली आई जस्ट ट्राई कि जब भी बच्चों का स्कूल है आई यूज टू चूज दैट टाइम ओनली, एंड देन कैसा होता है कि वी आर हैविंग बैकअप में हमारे पास स्टाफ एंड ऑल वर देयर, सो दे यूज टू हेल्प अस, अगर हम नहीं है तो कोई तो है वहां पे प्रेजेंट टू टेल देम, एंड इट इज एन अपॉइंटमेंट basis, morning hours OPD and evening hours OPD, in the afternoon we have little bit slot to work for something else, in that time we do sometimes camp, then sometimes we arrange for videos for our page, YouTube page or Facebook page like that, or sometimes we have some backup office work also, where we have to do so much of paperwork, so wo sab hua, sometimes we have to take that maintenance work for the machine or something is pending like that, so वो afternoon slot में we used to cover, so at that time we try, or otherwise I generally prefer to go on Saturday or Sunday,
where the kids are not going to school, and then that time it is easily you can manage. If you want to manage, the things are going to manage. It is like that. You have to take time or give time to something. If you want to learn something, you have to give them the time. And in fact, educating others, and also we educate ourselves also by attending various conferences, or you can say workshop or hands on. So many things going on every day. Sometimes online classes are also there. I used to attend that also, so that I used to get upgrade myself in my work also, not related to dentist. Also sometimes some educational kind of things going on. uh, I may tell you that sometimes, yeah, I used to watch with a Ankit Nirav videos, then Ankur Vaiko. You get to know कि नहीं भाई ये भी चल रहा है कुछ आपके side by side. So they used to tell us how good you should manage your time, how you should be get financially also, how you are going to manage the things. So that's how the things goes on. Learning is never ending like that. And I remember that when you, okay, guys, her daughter used to come and learn canvas painting and a sort of painting from me. So that time you told one sentence that clicked so well with me कि हम आगे बढ़ जाएं और हमारे बच्चे पीछे रह जाएं. I don't want that. So Right. I enroll her for this extracurricular activities. In spite of like you guys have to manage of picking and dropping of your daughter to various classes and all those things. So that thing really inspired me. Ki in spite of having such a tight schedule, you see to it that kids are not ignored in whatever they want to learn, right? Right. Actually, to be frank, what I think, if you choose to be a mother, we ourselves choose that we need to become a mother now, first thing. Okay. So be whenever you are ready now, then only you decide to bring, because it is your duty to make them a responsible person. Then you should have to give them the time. It is not like कि हो गया तो चलो चलता है. You know, it comes to my mind sometimes कि आज उसने अच्छे से नहीं खाया because I was working half an hour extra, and there she got the compensate कि शी इज अ किड ना, वो कैसे जल्दी जल्दी खाए. तो आई मेक श्योर कि मैं टाइम पे पहुंचू, सो दैट शी शुड बी. एंड यू नो, बच्चे बड़े हो जाते. Sometimes I think Ashwika was just born when I saw my the third one, and now she is just 9. कितना जल्दी ये टाइम निकल गया. एंड यू नो, आपकी एक जिम्मेदारी है, और वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी नहीं होती ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता. उसको नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता. मुझे लगता है कि नहीं, अगर मैं हो सकता है प्रेजेंट हो तो. एंड इट शुड बी अ मेमोरी. नाउ हाउ शी रिमेम्बर्स कि मम्मा मुझे क्लासेस लेके जाती थी, मैं ड्राइंग करती. नो, इट इज गुड मेमोरी ना. अपने पास अच्छी नहीं तो उसको याद रहेगा कि किसी के साथ मैंने उसको छुड़वा दी. नो. जब हम अपने पेरेंट्स की बात करते तो कैसे हम बात करते कि जब मैं छोटी थी तो मम्मी या डैडी मुझे स्कूल लेके जाते थे, वो मुझे लेके आते थे. नॉट अबाउट कि जो लोग नहीं कर पाते वो अच्छा नहीं है, बट अगर आप कर सकते हो तो व्हाई नॉट, वैसा है. तो मेरा रहता है कि मैं करूँ खुद से. ऑल दो मेरे यहाँ मेड्स हैं काम करने के लिए, बट स्टिल आई मेक श्योर कि मैं उनको गरम खुद से अच्छे से लगा के दूं, सो दैट वो खाना खाएं. नो, यू नो कि आपको लगता है ना कि हाँ मम्मी आएंगे तो खाना देंगे. नो, ऐसा है कि उसको याद रहे जब वो बड़ी हो. बिकॉज नाउ और 2-3 साल बाद आई डोंट, अभी जैसे उनको आधी चीजों में हमारी कोई हेल्प चाहिए ही नहीं, और कुछ टाइम में और हेल्प नहीं लगेगा. अच्छे थॉट्स रहने चाहिए, अच्छी मेमोरीज उसके पास हमारे लिए रहनी चाहिए कि हाँ, माय पेरेंट्स वर देयर फॉर मी, चाहे फिर सक्सेस हो या फेलियर. बिकॉज यू नो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच आवर किड्स हाउ टू डील विथ योर फेलियर्स. मेरे हिसाब से सक्सेस तो सब हैंडल कर लेंगे. समटाइम्स कैसा होता है ना, जैसे उसको लगता है उसकी ड्राइंग अच्छी है, बट इट वोंट कम. तो उसको वो फील नहीं होना चाहिए कि मैं उसको वही बोलती हूँ कि आपने किया, मेहनत किया, हो सकता है कि सामने वाले को दूसरे का अच्छा लगे. यू शुड एक्सेप्ट दैट. समटाइम्स तुम्हारा आता है तो दूसरों को भी चांस होना चाहिए. इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ तुम ही करोगे. तो दीज आर द स्मॉल थिंग्स व्हिच यू शुड टॉच योर चाइल्ड टू एक्सेप्ट योर फेलियर्स फर्स्ट. सक्सेस तो इजीली हैंडल कर ही लेगी वो. वैसा है. तो मैं उनको समझाती हूँ. अभी पता नहीं बड़े होंगे तो कितना सीखते हैं, but as a mother, whatever the responsibilities are, that I try to make them deal with.
Yeah, these are the small things. Now, I think kids remember. Being a kid, we also had so many of such small sentences that we follow now in our daily life. So the matlab, role of parents is very important, especially in the initial years, and even teachers also, because they Mhm. listen to teachers more than us. Right. तो कभी कोई कोई इवन आई फील कि अगर ना कोई टीचर पढ़ाने में बहुत अच्छी भी नहीं हो ना, अगर वो थोड़ा सा उनको ऐसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रही हो ना, तो दैट ऑल्सो अफेक्ट्स अ लॉट, क्योंकि कुछ टीचर्स Right. होती है जो आपको मोटिवेट करती है टू डू द थिंग्स इन स्पाइट ऑफ डूइंग रॉन्ग ऑल्सो, दे विल Right. मोटिवेट, अच्छा कर सकते हो आप. एंड Right. Right. समटाइम्स इट हैपेंस कि कोई टीचर ना, उनका मूड ठीक नहीं होगा या वट एवर देयर चैलेंजेस, वो ना बच्चे का एकदम सेल्फ एस्टीम ऐसे लो कर देगी ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, एंड दैट इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म फॉर द किड. तो भाई, हमें क्या बोलना है वो पता होना चाहिए वैसा है बच्चों के राइट साथ तो खास राइट बिकॉज वो राइट क्या मन पे लेंगे हमें मालूम ही नहीं है ना. सो लाइक दैट मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब तो टाइम ही है. एवरीथिंग यू कैन बाय इन दिस वर्ल्ड नॉट द टाइम. ऐसा कहीं तो मैंने सुना है या पढ़ा है. दैट इज अ कि फैक्ट ओनली ना, टाइम कभी वापस नहीं आता है, पैसा वापस आ जाएगा, हेल्थ भी एक बार खराब हुई तो आप लोग हो हमें वापस ट्रैक पे लाने के लिए. ओके, could you just share us some general tips कि हम हमारे दांतों का कैसे ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज वी यूजुअली टेक इट फॉर ग्रांटेड, जब तक कि उसमें कुछ दर्द ना चालू हो जाए हम आगे विजिट नहीं करते. actually, first, for taking care of your teeth, the first and foremost thing I will suggest that everyone should brush their teeth regularly twice a day, and before going to bed is the must thing. Everyone ignores that point because what happens when we go in the night, the food lodgement or whatever you have eaten in a whole day, it gets stuck in between. You never know, small tooth food particles also get stuck in between the teeth or on the above surface of the layers of the teeth. And what happens when we go to night, this bacteria becomes very active and it creates a cavity. So if you brush your teeth, this food lodgement and all, so you can say half of the things you have almost solved when you brush your teeth at night. Then second thing, you should avoid eating sticky foods. Sticky foods, you can say nowadays so many packed foods are coming in the market. The wafers, then biscuits, and then you can say chocolates. It is not like it is hazardous. What happens, these sticky particles that they get stick to your teeth and that again going to form the cavity. Then use so many carbonated drinks, avoid that because what happens if you drink too much, it is going to wear off your enamel layer and it is again going to trouble. In the last and the foremost thing which people know as nowadays is they are having some acidity problems, and because of the acid reflux which we get from the stomach, again it is called a tooth erosion. That word you should everyone should search in Google, and how it is going to affect your teeth. So see, because nowadays everyone is eating night at night and late night also, and something which is not very good for our health, and again it is going to, so again and again acidity problem, and then this is going to trouble your teeth also. And the last and tip I will suggest that you should always visit your dentist in every 6 months. Why? If you are having any small problem, you are going to solve as soon as possible. So these are some of the tips which I can share with you. ओके, सो डू यू से दैट व्हेन वी विजिट आवर डेंटिस्ट तो वो स्केलिंग और वो सब जो क्लीनिंग और वो सब होता है वो करवाना चाहिए, या फिर जस्ट द रेगुलर चेकअप? See, it is not needed कि हर 6 months में आपको क्लीनिंग कराना है. टू बी फ्रैंक, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे तो बोलेंगे क्लीन कर दो. रूटीन एग्जामिनेशन आई एम टेलिंग यू, जस्ट अ रूटीन एग्जामिनेशन. इफ नॉट नीडेड, आई नेवर थिंक एनी डेंटिस्ट इज गोइंग टू टेल यू कि नहीं आपको क्लीन कराना है. इट इज नॉट अ रेगुलर. इफ यू आर ब्रशिंग प्रॉपरली you don't need to clean also. Professional cleaning is only needed when you are having so much plaque or calculus accumulated in some of the area. So अगर जरूरत है तो ही वो आपको सजेस्ट करेंगे.
none of the dentist is going to say कि नहीं आप आए हो तो करना है. It is not like that. Examination is like कि आपको check करेंगे. If needed, they will again show you, and then you can decide whether to opt for the treatment or you want to wait. See, cavity ऐसा है ना कि it is not going to happen in a day. It takes years. ऐसा नहीं कि आज बोला तो कल कुछ हो जाएगा. We have time. You may plan for that on vacation or anything. So small cavities, you can get it filled up them anytime like that. बिकॉज आई रिमेम्बर जब भी मेरा फर्स्ट कैविटी हुआ था, दैट टाइम डॉक्टर टोल्ड मी कि ये आपको एक दिन में नहीं हुआ है, ये आपको इतने सालों में हुआ है, विच यू डिडंट टेक केयर. तो आज वो लाइक रूट पकड़ लिया है अभी उसने. नाउ यू हैव टू गो फॉर रूट कैनल. Yes. And that was like a lengthy process then. So that those are the tips that you like कि हमेशा चेकअप कराते रहो, रेगुलरली ब्रश करो, तो आपको शायद डेंटिस्ट के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. Right. Proper brushing technique एक होता है. If you go through the videos and all, you will find how is the proper technique. I think 50 to 60% people are doing in a wrong way. Okay, brushing की technique, I have to check now. You check in the YouTube, in my page also you will find. I have done there also. तो आप देखो कि कैसे करना है. What I start doing rubbing, not like that. There is a proper way and technique to clean everything, and that if floss also you may do, but it is like how to do in a perfect way. That is important. Not perfect, but correct तो हो. वैसा बोल रही हूँ. Okay. मतलब यहाँ वहां से कुछ होते हैं ना तो पता चलता है ये देखना चाहिए ये. तो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ आई विल गेट टाइम आई विल सी इन मोबाइल सम वीडियो और समथिंग रिलेटेड टू मतलब वेयर आई कैन ग्रो माई सेल्फ. आई टेल यू कि अगर मुझे कुछ है तो दिस मेडिटेशन आई यूज टू फॉलो एवरी डे. To be frank, Vishen Lakhani, and find him. It is a very small process, but that keep you focused. Day one, जब आप सुबह उठते ही वो करोगे ना, you will focus for the whole day. कि नहीं आज ये करना है. Because उसमें एक है process. You go inside you and you just think what you need to do. Try to manage. वैसा है. So that is the secret कि आप mentally अपने आप को कैसे stable रख सकते हो. Then you will be able to balance everything. Right. And see, both of you are like doctors. तो कभी ऐसा नहीं होता कि like यार आज आप बच्चों को देख लो, आज मेरा मूड नहीं है. I am too much tired or something. Yeah, sometimes your husband says कि you take care of everything. I just want to delegate it to. I am not in the mood. मतलब डॉक्टर्स लोग का मूड वूड चलता है क्या? जब हमारा सुबह होता है ना, when we both drink a cup of tea with each other, जब हम लोग सामने बैठते हैं, then we पहले ही चीज डिसाइड हो जाता है कि आज कौन लेने जाने वाला है कौन छोड़ने जाने वाला है. So that he can decide how his work is going to schedule for a day, and I can decide because see वो लेना और छोड़ना या उनको कुछ भी rest of the thing generally I used to take care कि हाँ उनको ये खाना है या टिफिन का है या जो भी चीजें हैं. बट ये अगर सॉर्टेड है तो आई कैन मैनेज माई वर्क कि हाँ ये टाइम पे मुझे तो स्कूल जाना है तो आई डोंट कांट कॉल एनी पेशेंट. एंड इफ ही इज गोइंग समवेयर देन आई कैन एक्सपेक्ट हिम टू गो देयर एंड पिक अप. तो वो मैनेज कर लेते हैं. लाइक दैट द थिंग्स गोज ऑन. क्योंकि कैसे आप बात कर लोगे तो वो चीज पहले से अचानक से पता चलेगा तो इट विल बी वेरी मेसी. तो वैसे हो जाता है मैनेज. Okay, so both of you like complement each other and share the responsibilities. Right. Great, awesome. And would you like to give some tips for the working moms? Try to be multitasker. होना ही नहीं चाहिए. जो पसंद है वो करो, जितने में आप खुश हो वो करो. When we try to prove ourselves to someone ना, there is the biggest fall down. तो प्रूव करना ही नहीं है कि मैं मल्टीटास्कर हूँ. मतलब समटाइम्स पीपल से कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो आई बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मुझे उतना नहीं आता. समटाइम्स सम ऑफ द थिंग्स जैसे मेरे काम के टाइम पे फ्यू ऑफ द थिंग्स जैसे विजडम टीथ निकालना है या कभी कभी गम सर्जरीज दैट वी आर नॉट प्रॉपर ट्रेन. आई कांट ट्राई ऑन सम. तो नहीं आता तो मैं किसी को बुला के कराऊंगी. सो इफ यू are getting stressed of some kind of work, ask for help. बात करना जरूरी है किसी के साथ. If you're not asking for the help, then you're going to end up yourself in trouble.
आपको नहीं आता है तो या तो आप सीखो या किसी से मदद लो, दैट विल बी द बेस्ट पार्ट। एंड डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ कि हाँ मैं घर भी संभाल सकती हूँ, मैं बाहर भी सब कुछ कर सकती हूँ मुझे ये भी आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, यू आर नॉट द परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। नहीं आता कोई चीज, सीख लेंगे जब टाइम होगा। नहीं भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं, चल रहा है सब कुछ, चल तो रहा ही है सब अच्छे से Yeah, so that is like the mantra for like not to putting too much pressure on ourselves कि हमें सब कुछ perfect like a superwoman सब कुछ करना है. Yeah, right. What happens when you try to do things in a perfect way? Ultimately, you're going to hurt yourself. वैसा होता है कि नहीं हो पाता तो आप अपने को ही परेशान होते हो, वैसा। Yes, yes, that happens कि हम लोग अपने आप को ड्रैग करते जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो होना ही चाहिए. एक हमें एक परफेक्ट मॉम का लेवल चाहिए, हमें एक परफेक्ट डॉक्टर का लेवल चाहिए, हमें एक परफेक्ट उसका मतलब हम लोग को लगता है कि लोगों का वैलिडेशन चाहिए कि हम लोग कुछ इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ बैलेंस करके चल रहे हैं. इस तरह से हम लोगों को लाइक ऐसा लगता है कि कहीं हम कमी ना छोड़ दे कुछ किसी चीज में, तो वो प्रेशर फिर बिल्टअप हो जाता है. तो अगर एक बार हमने वो रिलीज कर दिया कि नहीं हमें किसी को कुछ प्रूव ही नहीं करना है. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट टिप कि हमें इतना प्रेशर लेना ही नहीं चाहिए. जस्ट गो विद द फ्लो एंड एंजॉय व्हाट यू लाइक, राइट? Yes, yes, yes. And I would like to know who is your inspiration in life and why that motivates you to keep going like this. To be frank, मतलब मैंने अपना आधे से ज्यादा लाइफ आई एम स्पेंड विथ माय हस्बैंड नाउ so I think he is in a, I will say he is my inspiration towards my life, what I'm thinking. Because जब मैं मतलब when you come from the college and getting married, तो ऐसा तो कि कुछ ठीक है देखा जाएगा, बट जब जब मैं whenever I used to sit with him, he just tell me कि नहीं ऐसा प्रोग्रेस करना चाहिए, ये सीखना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, या हाउ टू मेंटेन द रिलेशन विथ ईच अदर, एनीथिंग. So he has been a very great inspiration in my life. In the next credit, I will give to my mother. She has teach me so many things. Means आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ. And my father was always helping me कि हाँ आपको कुछ भी सीखना है, we are there to help you. चाहे वो financially है, कहीं पे मुझे how I was telling you कि उसको याद रहेगा ना कि मैं उसको लेके कैसे जाती थी. He was taking me फ्रॉम ट्रेन टू गिव वन एग्जाम. कभी हम कर्नाटका जा रहे हैं, कभी बैंगलोर जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा, बिकॉज इट वाज अ स्मॉल टाउन. सो my parents and my husband both are the inspiration in my life. I used to learn so many things from them in day to day. And now I think sometimes I see my kids also, how they are very calm and you have to learn so many things from them also. कभी कभी होते हैं ना हम गुस्सा करते हैं, they don't say anything. अगर यही मैं और आप होंगे तो शायद कोई और वे में रिएक्ट करे. I think I find myself to be surrounded by the people who I find my inspirations in my life, whom you have grown up in your life. आप जिनको देखोगे उनसे ही कुछ सीखोगे. That we have learned ना, तो वो मुझे रूट्स लगता है होते जो हैं, वो तो रूट्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स तो हमारे रूट्स होते हैं जहाँ से हमने कुछ सीखा होता है. But it's a blessing that you have such an supportive husband who motivates you to keep going and supports you equally. लाइक you see कैसे है ना, if he sometimes what happens ना, अगर आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो then life become very easy. There is no expectation type kinds of things coming in both of us mind कि ये करना है. It is like कि सपोर्ट करना है. It is not like expectation है कि आप सब करो. So your life becomes very settle, and you will be very कि हाँ ठीक है, अगर कोई बात नहीं ये नहीं होगा तो मैं नहीं तो वो कर सकते हैं. It is not like कि ये तुम्हें ही करना है या ये मुझे ही करना है. That thing never happened in my home and not at my workplace. It is not like कि ये मुझे करना है, ये मेरा है. Peaceful mind wherever I'm going कि नहीं, my kids are in the safe hand. Right. So it is very important to have very good relation with your husband and also. तो आपका लाइफ बहुत अलग हो जाता है वैसा है.
Awesome, awesome. Bless you with more of such amazing moments and the amazing support that you are receiving. ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं होता. We are having disagreements also. We fight also, but again things goes on. कि see, everything will be nice. It is not like कभी आपको ये चीज पसंद है मुझे नहीं, तो same thing happens. But उस disagreement का कुछ एक solution निकालना पड़ता है. There we sit and talk. Then only the thing goes on. वैसा होता है. और वो होना भी चाहिए, अदरवाइज सारी चीजें स्मूथ चलती रहेगी तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी. Not like it very. See, my disagreements with the things goes very different. मतलब जैसे मुझे कोई चीज नहीं पसंद है तो नहीं है, and if he likes something तो उनका thought है, but it is not very compulsion कि उनको वो पसंद है तो मुझे पसंद आनी चाहिए. तो he understand कि हाँ शायद उसको नहीं पसंद है. He will never force me कि नहीं तुम्हें नहीं है तो ये करना पड़ेगा. That's the best part. If you ask me, as I have seen you, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि like you have always inspired me कि like कुछ भी हो, if we decide we have to do, हम कर सकते हैं. There is nothing we can, especially there is nothing कि जो हम लोग नहीं कर सकते हैं. Either we take help or we do it ourselves, but we can do it. We can make things work for ourselves. Yes, yes, yes. ये तो है. ट्राई करेंगे तो हो जाएगा. कुछ ना कुछ तो निकलेगा उससे. कोशिश ही नहीं करेंगे या पहले ही सोच लेंगे नहीं कैसे होगा कैसे होगा, उसको सोचने से अच्छा स्टार्ट कर दो, देखा जाएगा जो होगा. Right, thinking, it's better to act rather than keep on thinking. क्योंकि हम एक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है. अगर हम एक्ट ही नहीं करेंगे, हम सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं वर्क करने वाला. Right, right, right. Thank you so much, Dr. Deepkriti, for being on my channel and inspiring so many others how we can like manage everything if we once decide. So, guys, hope you enjoyed this inspiring interview, and thank you so much for coming to my channel, Dr. Deepkriti. It was nice talking with you, and thank you once again for taking out time. Thank you so much for inviting me. And thank you for staying till the end, and thank you for your overwhelming support. I am really blessed to have audience like you who come week after week and learn from so many amazing guests on my channel. Thank you so much, guys. So bye, guys. See you with some other guests at some other time. Thank you, Dr. Deepkriti.